नमस्कार, आप देख रहे हैं पीबीटी एक्सप्रेस न्यूज लाइव चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए रुक कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। एक बात बोलना भूल ही गया था मैं कि मैं इन दोनों अंकलों को ना बहुत टाइम पहले से जानता हूं। जब इन्होंने ये लीग स्टार्ट किया था उस वक्त से जानता हूं मैं। समझिए आप? यू अंडरस्टैंड? नहीं नहीं, वहीं 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 पर। व्हाट डिड यू गेट इट? बहुत टाइम पहले से जानता हूं। पहले मैं देखा, मैंने इसको बोला कि स्टार्ट कर लो, अगर अच्छा चलता है तो मैं आ जाऊंगा। इन्होंने अच्छा करा दिया तो इसलिए मैं आया हूं एज ब्रांड एम्बेसडर। अच्छा लिसन, हेलो, वन मोर थिंग आई फॉरगॉट टू टेल यू, इन्वेस्टर भी हो जाऊंगा मैं इसमें। यू वांट टू कम इन एज इन्वेस्टर विथ मी? व्हाट? I think this is a moment when the claps should be coming in. You know, everybody, please put your hands together. साइड में मम्मी है। कहा था ना बेटी माँ पर गई है। लेकिन ये कैसा हो गया भाई? मतलब Supercross over there as well. I'm going to ask you. Yes. सुपर क्रॉस तो वो है भाई, वो क्रॉस देखो। Right. Right. Moving on, Veer, I'll come to you. You know, you wear a lot of hats. What is more difficult, racing Supercross? मम्मी ने or- डैडी को बताया, हाँ तुमने बहुत मेहनत लगी। Coming back to you, right? You wear a lot of hats. Which one is tougher? Which is more difficult? Is it racing Supercross or running the league? I think handling me. Handling you. that is definitely there. I think racing supercross is tough on the body, and running ISRL is tough on my sleep, time, and peace of mind. So definitely, running ISRL is difficult. Is more difficult, right? Salman bhai, I'm going to come to you. I've got a question. Yeah, sure. भाई साहब आप मुझे बताओ कि बच्ची हो गई है आपकी, हाँ, लेकिन अभी भी एक्साइटमेंट के शादी हो गई, बच गया, ये चल रहा है कि नहीं माइंड में? हाँ चल रहा है ना? Old friends uniting, ladies and gentlemen, over here. But sir, I'm going to come back to you. Indian Supercross Racing League, outside my league, my wife. Outside your league is over there. The league is over here. There is a God. He proves it. There is a Lord. I'm going to come back to you, sir. On the league that is within us, not the league that is outside. I'm lost now. You're Lord. Oh, man. All right. कमाल है यार, तेरी भी हो गई। The star of the show, ladies and gentlemen, is over there today. Yeah? Out of Salman Khan's league is saying something about the lady. But the question is, I would like to also want to know from you, is... Now here. ये तो जिंदगी की रेस में बहुत आगे निकल गया। हम लोग इंडियन सुपरक्रॉस रेसिंग लीग। So I think this is amazing. Nana, I have known Ishan and Veer. In fact, Veer was named Veer after Veer, the film. Father Raju called me up and he said कि यार पिक्चर बहुत अच्छी लगी। तैसे सिर्फ आप ही को अच्छी लगी, इसलिए वो मैं अपने बेटे का नाम वीर रखना चाहता हूँ। Just kidding. जब तक वी रिलीज हुई ये ऑलरेडी बाहर थे और मोटरसाइकिल पर थे। So I've known these guys for the longest time. So I remember I was doing a film called Race और उसमें एक मोटरसाइकिल का सीक्वेंस था। So I got in touch with them. Remember that? And they came to teach me how to ride. I mean, I knew how to ride, so they were riding with me at the farm, and they also came to Thailand where we shot it. And ये थाईलैंड में मोटरसाइकिल से नहीं गिरे, लेकिन रात को एक दो बार ये गिर गया। Yeah, so you know, I've always been a rider, and hi baby, hi. I've always been a rider. Always liked when some cycles से लेके motorcycle तक
and I really enjoy that. I can't do this often right now, but I still do ride at the farm. These guys have helped me make a track, so I ride on the track. अभी वो जम्प्स वम्प्स नहीं करता मैं, बिकॉज शूटिंग पे भी जाना पड़ता है कि थोड़ा सा गिरा गया तो 3-4 महीने not be able to shoot. Yeah, पूरे सेफ्टी गियर वगैरह से. See, I live in Bandra, and ये जो हाईवे जो है हमारा, ये जो हम लोग फिल्म सिटी थाना जिस पे जाते हैं, so there's this group of guys, lots of them, they ride bikes there, and for a little bit of money. And I myself have carried some 3-4 kids to the hospital. And इस हाईवे पर बहुत सारी deaths हुई because of racing. They race on the roads and between cars. So I just think that if you need to race, we have this now. Come aboard and practice with us and race with us for a larger sum of money and with proper gear. I think that racing on the road is not only safe for you but for other people as well. So अब ऐसी कोई टीम थी ही नहीं, ऐसा कोई क्लब था ही नहीं. अभी आ गया है ये Indian Supercross Racing League. So a lot of people can, now join us and start racing professionally.